Jai Hind everyone. We are today going to introduce about the English language paper which will be asked in your AFCAT as well as CDS examinations. Are you ready? Yes. And if you are ready, let us start now. First of all, you will have to understand that the English language paper consisting of some important topics in AFCAT as well as CDS examinations. So let's understand what is going to be asked in the examination and what is the pattern of the paper. क्या पैटर्न है, पेपर का क्या पैटर्न है वो हमें समझना है. So first of all, we will see what are the topics, what are the main points that are being asked in the examinations. First of all, the first question you will see in the paper will be in reading comprehension. So reading comprehension is very interesting as well as you can solve it easily if you understand the main contents or in theme of the that question. So first of all जो आपको दिया है मैटर दिया पढ़ने के लिए रीड पैसेज है, उस पैसेज को केयरफुली आपको रीड करना है. केयरफुली आप रीड कर पाएंगे, उसके जो मैटर है उसमें दिया है उसको समझेंगे तो इजीली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे. एंड दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. एंड इसके कुछ टिप्स हैं. देयर आर सम इम्पोर्टेंट टिप्स आल्सो दैट आई विल टेल यू very shortly. And so you have to understand that the first question that will be asked in your examination will be reading comprehension question, and a paragraph will be given to you and you will be asked to answer the question given from the choices. So one question, if you do it successfully, then you will have to move on to other questions also. And the second one in a stage is grammatical rules related questions, that some sentence will be given to you and you will be asked to find out the errors, to spot the errors. आपको spot error spot करनी है. That may be having some mistake, whether it may be spelling mistake or grammatical mistake. तो कोई ना कोई उसमें मिस्टेक होगी, इसलिए आपको ग्रामर के रूल्स जो हैं वो आपको मालूम होना चाहिए. यू शुड बी नोइंग ऑल द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, all important rules. I'm not saying all the rules of the grammar because it will take time, because your examination is not too far. So really you will have to understand in a short. You have to study some rules in the short manner. तो शॉर्ट में आपको समझने पड़ेंगे वो रूल्स. और उसके बाद क्या क्या वो रूल्स हैं. रूल्स starting from the beginning, all the part of speech rules. So you should know what are the part of speech and which are the rules. Those rules I will be explaining to you in the subsequent lessons. So first let us understand that what type of question that will be asked in your examination. So let's understand the pattern of the paper. Okay. So first of all, the first question you will see in the paper will be reading comprehension question. उसमें आपको कुछ छोटा सा पैसेज दिया होगा. इट विल नॉट बी वेरी लेंथी. दिस विल बी a medium passage, medium size passage, and you will be asked to find out the answer of those questions. Some option will be given there. तो उसमें ऑप्शंस होंगे, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है. उसको आपको रिलेट करना है कि ये क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन
एंड ऑफ द पैसेज दिया रहता है, उसको आपको देखना है कि ये क्वेश्चन कहाँ पर है, किस पैसेज में, मतलब बिगिनिंग में मिलेगा, एंड में मिलेगा, मिडल में मिलेगा, दैट यू विल हैव टू फाइंड ए क्लू टू दैट क्वेश्चन। क्लू, क्लू जो होता है क्वेश्चन के बिगिनिंग, क्वेश्चन में ही इटसेल्फ हिडन होता है। क्लू या कीवर्ड है of that question is hidden in the question itself। उस क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ क्लू है, वो आपको उसमें मिल जाएंगे, पैसेज में मिल जाएगा। और जिस स्थान पर मिलेगा, जिस प्लेस पे वो मिलेगा, वो जो लाइंस हैं, वहीं पे आपका आंसर हिडन होगा, आपका आंसर वहीं पे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय एडवाइस इज टू रीड द पैसेज केयरफुली। एक बार उसको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो आपका दिया रहता है क्वेश्चन, उसको पैसेज को आप केयरफुली एक बार पढ़ लें, बिकॉज इट इज नॉट वेरी लेंदी, इट विल नॉट टेक मच टाइम। तो वो एक सिंगल रीडिंग कर लें, केयरफुली रीड कर लें वंस, एंड सेकेंडली एट द सेकेंड स्टेज what you have to do is to read the questions। क्वेश्चंस जब आप रीड करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन के आंसर कहाँ पर हैं, किस सेंटेंस, जिसके पैसेज के किस पार्ट में मिल सकते हैं हमें। तो आपको ये देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर आपने ढूंढ लिया तो फिर आपको आंसर वहां मिल जाएगा, ठीक है। और जो दूसरी बात ये है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, कि आप अपना आइडिया मत लगाइए। जो उसमें दिया है पैसेज में, ठीक है, जो उस पैसेज में दिया है उसी को केयरफुली रीड करके उसी में आंसर जो दिए हैं वही देने हैं आपको, अपने से आंसर बना के कहीं बाहर से नहीं देने। नंबर 2, अब उसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि कुछ उसमें जो ऑप्शन दिए रहते हैं क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं, नंबर 1 क्वेश्चन मान लो उसके 4 और 5 ऑप्शंस हैं, तो यू विल हैव टू रीड देम, रीड द ऑप्शंस। उसमें ये देखना कि कौन सी इररिलेवेंट है। बहुत से हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे दैट विल बी आउट ऑफ रेफरेंस, आउट ऑफ रेफरेंस होंगे, है ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होंगे, वो आपके काम के नहीं है। या वो बहुत ज्यादा एग्जैगरेटेड होंगे, वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे, उनको भी एलिमिनेट करना है। आपको रिलीवेंट जो है ऑप्शन दिख रहा है, उसी में से आपको सिलेक्ट करना है। सपोज आपके 5 क्वेश्चन ऑप्शंस हैं, 5 में से 2 आपको इररिलेवेंट लगते हैं, तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट वन। अब जब आपको 5 में से 2 आपके एलिमिनेट हो जाएंगे तो आपके बचे 3, यू हैव 3 ऑप्शंस। उसमें से आपको एक ऑप्शन और ऐसा मिल जाएगा जो आपको लगेगा सेकंड रीडिंग में, अरे ये काम का नहीं है, ये इसमें सूट नहीं करेगा। फिर आउट ऑफ 2 ऑप्शन उसमें से फिर आपको फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टेक्निक है, एलिमिनेशन मेथड है, बेस्ट है। तो नंबर 1 आपको फर्स्ट एक बार आपको रीडिंग करनी है, यू हैव टू रीड द पैसेज वेरी केयरफुली। एंड सेकंड स्टेज पे आपको क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको, उनमें जो क्लू दिए हैं, कीवर्ड्स दिए हैं, वो कीवर्ड से आपको फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर किस पार्ट में मिलेगा, इस पैसेज के किस पार्ट में इसका आंसर हिडन है। वहां से आपको आंसर मिल जाएगा, तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, हाँ हमारा आंसर यहाँ पर है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। नंबर 3, एलिमिनेट करना है आपको, जो आउट ऑफ रेफरेंस है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है ऑप्शंस हैं, उनको एलिमिनेट करना है। फोर्थ, आपको वोकेबलरी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो उसमें देखने हैं और उसका आंसर सही देना है, उनको समझना है कि वोकेबलरी में कुछ एंटोनिम्स पूछा है या सिनोनिम्स पूछा है, व्हाट दे हैव आस्क्ड। तो उसको रिलेट करते हुए उसका आंसर आपको ऑप्शन में देख के बताना है। तो दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इफ यू प्रैक्टिस 4 to 5 times you will get to
good result. Okay. The next one, the next stage that we will have in your paper will be spotting the errors, error detection. There will be one or more than one sentences given to you, and you will be asked to find out that as to which part of the sentence there is a mistake, error. So you will have to find out the error in different parts. The sentence may be divided in 4 to 5 parts. The sentences or a group of sentences will be divided in 4 to 5 parts, maybe 1, 2, 3, 4, 5, or maybe A, B, C, D, E. So you will have to find out where the mistake, in which part there is a mistake. It may be a spelling mistake or it may be a grammatical mistake. Okay. For this, spotting the errors, if you want to know the rules, you can refer some important grammatical rules in your books as well as on my this channel also. You will get some important rules of nouns, pronouns, adjectives, verbs. So I have already put the rules, important rules of grammar. You can refer to this channel also. And also I will be teaching you some important rules also, which are very important for your this type of questions, spotting the error type of question. So once your grammar rule concept is clear, you will be able to give the right answers of the questions. Okay. Now we move on to the next stage, sentence completion. In this phase, you will be given 1 or 2 sentences, and there is only one or more than one blank spots, blank spaces, and where you will have to fill up the words from the given choices. 4 to 5 choices will be given to you, and you will have to select the right answers where it can be filled in that sentence. Okay. So this will also be done with subsequent practice sessions that you will be getting in my classes. वो आपको मिलेगा, वो आपको मैं उसको सिखाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा उसके, ठीक है ना. Then more important is and more frequency of these words is testing of vocabulary. So testing of vocabulary is also very important. That includes spellings. स्पेलिंग्स भी इसमें हो सकती हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं, ईडियम्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी हो सकते हैं. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको स्पेलिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे. ये भी आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, बहुत सीखना है, बहुत सारे प्रैक्टिस आपको करना है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो आपको आगे की क्लासेस में आपको वो मटेरियल आपको मिलेगा और सिखाया जाएगा. So one thing, the most important thing is that you will have to practice more and more. जितना प्रैक्टिस करेंगे, you will be learning with me in all these subsequent classes before your examination is held. And also I will be giving you some important questions about general awareness that includes basic GK as well as the latest GK, latest update of general awareness. You will also be getting in my classes. So be with me, stay with me, and keep learning with me. And I wish you good luck that you will be getting selected by all means. And you are capable, you can do it, be confident, and you are a winner. You can win the race. So be ready and start with me beginning from the first session
and up to the last session, which I will be teaching you before your examinations are being conducted. So let's start now. Get ready, be confident, and be ready to crack the examinations, AFCAT as well as CDS examination. This session is going to be helpful to you for both AFCAT as well as CDS examinations, as well as some other examinations also if you are appearing for those exams. Okay, so good luck. Let's start now. Okay.